Okay, students. So, am I audible to you? Yes, sir. And is the screen visible? Yes, sir. Okay. Okay. So, today's topic is arrays. So, arrays समझने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि arrays है क्या. 1 minute. So, सपोज आपके पास एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो जिसमें आप उनके मार्क्स स्टोर करना चाहते हो. तो यहाँ आपके पास दो चॉइसेस बनती हैं कि आप क्या करो. या तो 500 वेट करो पहले, स्टूडेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू, एंड अप टू 500. सो पहला तरीका तो ये है, बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज 500 creating 500 variables will take a lot of time and it will occupy a lot of space in the code. So जिससे कि आपके कोड की रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. और मतलब ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है कि आप ये मेथड यूज़ करके मार्क्स को स्टोर करें. सो सेकंड मेथड है कि आप एरेज का यूज़ करें, और एरेज ही रिकमेंड किया जाता है. सो लेट चेक व्हाट इज एन array. An array is a collection of similar kind of data stored at contiguous memory locations. An array is a collection of similar kind of data stored at contiguous memory location. So meaning क्या है, array क्या है, array सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन है. सपोज आपके ठीक, मैं यहाँ पे एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज आपके पास एक फाइल है
मैथ की फाइल है सपोज, तो उसमें जितनी शीट्स लगी होंगी वो सारी क्या होंगी, मैथ से रिलेटेड होंगी। कोई आपके पास आईटी की फाइल है तो उसमें जितनी शीट्स लगी होंगी वो क्या है, आईटी से रिलेटेड है। तो सिमिलरली सिमिलरली आपके पास एरे होगा, तो एरे में जो है वो डिफरेंट डेटा होगा, बट वो डेटा जो सिमिलर काइंड का होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीजर का डेटा क्रिएट किया। नो, आई एम नॉट म्यूट। Wait, I think I'm not audible to some of the students. Let me clear this first. Am I audible in the live chat? Am I audible in the live class? Okay, so I'm audible in the live class. So what I was saying, let me begin from the starting. Maybe some of you have not heard me. सो मैंने कहा था कि सपोज आपके पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में आपके हैं 500 स्टूडेंट्स, और आप 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहते हो। सो वन वे तो आपके पास ये है कि आप 500 वेरिएबल क्रिएट करो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3, एंड सो ऑन अप टू 500। So this task will basically take too much time. It is not viable. Okay, 1 minute. Students, sorry for disturbance. Just 1 minute. ओके, सो मैंने कहा था कि आप 500 वेरिएबल्स क्रिएट करोगे फॉर स्टोरिंग मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए वायबल नहीं होगा, बिकॉज creating 500 variables will take too much time, and it will occupy too much space in your code. So आपके कोड की जो वो रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक सेकंड मेथड है, विच इज़ ऑफ एरेज। So what is an array? Array is a collection of similar kind of data stored at contiguous memory location. So पहले definition को break करते हैं. Array is a collection of similar kind of data. So what does it mean? Like आपके पास एक फाइल है, सपोज वो मैप आपकी मैथ की फाइल है, तो मैथ का फोल्डर है, तो मैथ के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी आपकी मैथ की होंगी। सिमिलरली आपके पास कोई इंग्लिश का फोल्डर है, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड होंगी। सो सिमिलरली आप जब आपका एरे क्रिएट कर रहे हो, सपोज वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप के एरे के अंदर जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी वो सब कैसी का, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, स्ट्रिंग की होंगी। और मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो आप, वो अभी आगे देखेंगे कैसे क्रिएट करना है। सिंगल वेरिएबल आपने क्रिएट किया, बट उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हो। एंड व्हाट डज इट मीन, स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सपोज आपने एक एरे क्रिएट किया जिसमें आपने इंटीजर इंट मार्क्स इक्वल टू
1 2 3 4 एंड 5। आपने एक मार्क्स नाम का एरे क्रिएट किया, उसमें आपने 1 2 3 4 एंड 5 स्टोर किया। तो ये जो है ये आपके 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। सपोज आपका जो 1 है वो अगर 2000 लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, तो जो आपका 2 होगा वो 2001 पे स्टोर होगा, 3 है वो 2003 पे, 4 2004, एंड similarly it will be stored at contiguous memory location। वन वन जो है आपका 2000 पे स्टोर हुआ था, 2 है 2001, देन 3 2002, 4 2003, 5 2004। In this way an array is stored in the memory location। So basically array is of two kind: one dimensional array and multi-dimensional array। In multi-dimensional array we can create 2D arrays, two dimensional arrays, 3D arrays, three dimensional arrays, and many more। Basically this is the basic definitions about array. We are discussing about the basics of array. Very soon we will move to the code, but before moving to the code, definitions of array must be clear to you। So is the definition clear to you? Good evening, Himanshu, Gaganpreet, good evening, Kanika, good evening। Okay, so is the concept of array clear to you till now? Yes, sir. Okay, life class, is it clear to you as well? Okay, so next we have, yes, okay, कर दो। Okay, Satbir, let me repeat it. So, array is basically a collection of similar kind of data stored at contiguous memory location। Suppose आपने integer array create किया, तो integer array के अंदर जितनी भी values होंगी वो आपकी integer ही होंगी। फ्लो अगर आप float array create करोगे तो अभी इसका हम syntax वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो float एरे के अंदर जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी वो फ्लोट डेटा टाइप की ही होंगी। आपने कोई स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग की होंगी, और ये जो है वैल्यूज उसकी वो कहाँ पे स्टोर होंगी? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सपोज आपने इंटीजर इंटीजर एरे क्रिएट किया, उसमें आपने वैल्यू पुट की 1 2 एंड 3। सपोज आपने इंटीजर एरे क्रिएट किया, उसमें आपने वैल्यू पुट की 1 2 एंड 3। तो लेट इज एक एग्जांपल, अगर 1 आपका जो है वो 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, 1000 यू कैन जस्ट से इट इज द पोजीशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी में वो 1000 पोजीशन पे स्टोर हो रहा है 1। तो 1001 पे 2 स्टोर होगा, 1003 पे आपका 3 स्टोर होगा। ये जो है आपका ये कंटिन्यूअस वे में स्टोर होगा इन द मेमोरी लोकेशन। एरे की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मेमोरी लोकेशन में कॉन्टिन्यूसली स्टोर होंगी। ओके सतबीर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एरे इज ऑफ टू काइंड। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि टू काइंड्स के एरे हैं। अभी अगर आपको ये जस्ट अभी रिमेंबर रखो, इस आगे इनकी डेफिनेशन और देखेंगे कि ये हैं क्या। वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। एंड फर्दर मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर आपके 2D एरेज, 3D एरेज, 4D एरेज, सिमिलरली आगे बहुत से हो सकते हैं, बट हम बेसिकली 1D एंड 2D की ही बात करते हैं। 2D से आगे प्रैक्टिकली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वो यूज नहीं होता प्रैक्टिकली। So we will be talking about one dimensional array, and inside multi-dimensional array we will be covering 2D arrays. Next, what is the syntax of array and how to declare arrays in Java? We have three ways to declare arrays in Java। So हमारे पास थ्री वेज हैं कि हम एरे को डिक्लेयर करें। अब एरे के लिए भी तो आपको वेरिएबल नेम चाहिए ना। आप मैंने बताया था वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर। तो आप
एरे अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कंटेनर तो चाहिए ही चाहिए। तो एरेज की जो मल्टीपल वैल्यूज है वो सिंगल कंटेनर में ही स्टोर हो जाएगी। बट याद रखना कि वो जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर डेटा टाइप की ही होंगी। सपोज आप शुगर और सॉल्ट को सिंगल कंटेनर में फिक्स नहीं कर सकते, बट या शुगर की जितनी मर्जी अमाउंट आप एक कंटेनर में फिक्स कर सकते हो। ये चीज आप एग्जांपल सोच सकते हो। सो फर्स्ट वे इज डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन इन द सेम लाइन। आप क्या करोगे, एरे को डिक्लेयर भी करोगे और उसे मेमोरी एलोकेशन भी दे दोगे इन द सेम लाइन। सपोज what is the syntax of array? Just check the syntax of array. We have int, after that this square bracket, basically this square bracket denote array. I have declared integer data type array and the variable name is marks. Okay, let me this remove the comment. I have declared integer data type, then it is the symbol of array. Marks is the variable in which I have storing new integer. You have to write this new keyword and integer, and this is 5। मीन्स आपको जो आप एरे बनाना चाहते हो मार्क्स, उसके लिए आपको मेमोरी लोकेशन कितनी चाहिए, 5। मेमोरी के 5 ब्लॉक्स चाहिए, 5 स्पेसिस चाहिए आपको मेमोरी के लिए। और आपको मैंने पहले बताया था कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो 5 जो ब्लॉक्स हैं वो कितनी स्पेस लेंगे, 5 ब्लॉक्स विल ऑक्यूपाई 20 ब्लॉक्स, 20 बाइट्स। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एरे जो है डिक्लेयर किया, उसे मेमोरी एलोकेशन दी कि मुझे अपने एरे को कितनी मेमोरी के कितने ब्लॉक्स चाहिए, 5। देन अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। सो एरे को हम इनिशियलाइज करेंगे। अब ये जो है ये मैंने इंडेक्सिंग दी है 0 1 2 3 4। इंडेक्सिंग को आप पोजीशन से रिलेट कर सकते हो। Let me check first, this is this the code working? ओके, सो अभी आप ये देखो, मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग के बारे में बताया। मीन्स मेरी जीरोथ पोजीशन पे एरेज जो है, एरेज की इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड्स में बताया था, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी जीरो से स्टार्ट हो रही थी, एरेज की इंडेक्सिंग भी जीरो से ही स्टार्ट होगी। At zeroth position we have 90, at first position we have 80, and these we are storing marks of 5 students। अब 500 का भी स्टोर कर सकते हो आगे। इस और वे देखेंगे, पहले ये वाला वे देखो आप। मैंने जीरो पोजीशन पे 90 स्टोर कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे 85, सेकंड पोजीशन पे 80, थर्ड पोजीशन पे 77, फोर्थ पोजीशन पे 89। ये मैंने क्या किया, एरे को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज यानी स्टार्ट किया, उसको वैल्यूज एलोकेट कर दी। तो यहाँ तक अभी सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, लाइव क्लास till now is everything is clear to you?
live class. Till now, is everything clear to you? Okay. So it is what I was initializing the array. Suppose I want to print which marks is present and at the zeroth position. I need to just write south marks of 0. We will get 90. See the statement: system.out.println marks at the zeroth position. You will read it at marks at the zeroth position. Marks is the variable name of the array and 0 is the position. Suppose you want to print marks at first position, just change the position only. Similarly, marks at second position, third position, and fourth position. So what you will get: 90, 85, 80, 77, and 89. See, as you can see the output, we are said today is last session. Yes, Satbir, today is last session. We are getting 90, 85, 80, 77, and 89. You can see the code. I have written the statement for printing marks at zeroth position as well as first, second, third, and fourth, and we are getting all the marks present at those particular positions. Okay, is that clear? Yes, sir. Is that clear? Okay. Next, what the user wants to print marks located at fifth position. So as you can see that we have not declared marks at fifth position because in our array we have only occupied the spaces for five integers only. So I have declared 1, 2, 3, 4, and 5. Now user wants to print the marks stored at fifth position. But in actual, you know that we have not declared anything on the fifth position and it is not in a specified in the space of our array. So it will result in you can see array out of bound, index 5 out of bound for length 5 at main. You can see what the output is saying: exception in thread. Basically it will return a error because we have not declared anything on the fifth position. In fact, if we declare also, there is not डिक्लेरेशन इन द स्पेस. सो जिस चीज के लिए हमने स्पेस ही नहीं ऑक्यूपाई की, हम उस चीज को वहां पे पुट कैसे कर सकते हैं? आप अगर यहाँ पे पुट भी कर दोगे तो भी वो एरर ही देगा. ये देखो, मैंने अभी डिक्लेयर, मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, मैंने वैल्यू पुट भी कर दी, पर फिर भी वो एरर ही दे रहा है बिकॉज उसके लिए स्पेस तो मैंने ऑक्यूपाई की ही नहीं थी. Everything is clear. Why it is showing index 5 out of bound? So this thing, it was the first way to initialize an array, first way to declare an array. Okay, see, we were doing the declaration
and allocation of memory in the same line. Now we have second method. Let me first make it as comment. In second method, we are declaring and allocating the memory location in different lines. There's little bit difference in all the three ways. So as you can see that it is similar to it is kind of similar to the previous one, but the only difference is that in the previous one we were declaring the array as well as allocating the memory in the same line, but now we are doing declaration and memory allocation in different lines of code. So here int array marks, we are creating an integer type of array having variable name marks, and for marks we are occupying 5 blocks of memory, and these two are written in two different lines. Is it clear? Is the second way clear to you guys? Yes, sir. Okay. So array initialization is same in the second way. So let me make this copy and paste there. And that's out statement also. Okay. So same I have, let me change the marks. So we are storing 67 at the 0th position. At first position we are storing 85. At second position we are storing 95. At third position we are storing 34, and at fourth position we are storing 67. So if we write south statement as earlier for all these array, we will get the same result. The only difference is in the declaration and memory allocation. So as you can see, we are getting 67, 85, 95, 34, and 67. Similar error will return if we try to sort the marks at fifth position. Index 5 out of bound. Let me here mention. Okay, is it clear? Live class, is it clear to you? The second method of declaring and initializing the topic. Okay. Now we have a third way, declaration, memory allocation, and initialization together in the same line. So first, let us make this as comment. Next, we have declaration, memory allocation, and initialization together in the same line. So we have declared integer type of
array marks as its variable name, and we are not declaring the memory allocation, how many blocks will it occupy. Simply we are giving the values. At 0th location we are locating 90, at first location we are locating 89, after that 87, 47, and 90. So how will it get to know about the size of the array? It will automatically calculate by counting the number of elements present in the array. So here we have 5 elements present in the array. Suppose, let me make it 6. Here we have 6 elements present in the array. So automatically the size of the array will become 6. It will occupy 6 blocks of memory. Is it clear? Is the third way of declaring array clear to you guys? Yes, sir. Okay. So similar, I want to write the south statement. So let me copy all these. तो यहाँ पे मैंने अभी जीरो पोजीशन का मार्क्स प्रिंट कराने की कोशिश की. आफ्टर दैट 89, आफ्टर दैट 87, आफ्टर दैट 47, 90 and 98. Here the marks at fifth location will not throw an error because we have declared marks at fifth position. Okay, but if we try to sort the marks at sixth position, it will definitely throw an error. So as you can see the output, we are getting 90, 89, 87, 47, 90 and 98. And at last we are getting index 6 out of the bound. Third type array. HK Gill. Okay, please. Okay. Let me repeat the third type of array. In the third type of array, we are declaring, allocating the memory, and initializing the array together in the same line. So, little bit difference in the syntax. I'm declaring the integer type of data. After that, array symbol. Then marks as the variable, and we are by commas. So यहाँ पे हमें जो है मेमोरी एलोकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती. लाइक ऊपर हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की थी ना, 5 मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए थे. यहाँ पे वो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप कंपाइलर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि यूजर ने अगर 6 वैल्यूज दी हैं तो उसे 6 ब्लॉक की जरूरत होगी. अपने आप कंपाइलर कैलकुलेट कर देगा. तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन के अंदर ही डिक्लेयर, मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइज सिंगल लाइन के अंदर ही कर देते हैं. ओके एच के गिल, नाउ इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो यहाँ पे हमने सिंगल लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दिया. नाउ आई वांट टू टेक द प्रिंट ऑफ ऑल द marks stored at that particular locations. So I am writing the south statement as I have used earlier. So it is giving the result. At 0th position we have stored 90. At first position we have stored 89. Second position 87. Third position 47. Fifth position 90 and sixth position 98. Okay.
So as I have told that you, the our array indexes start from 0 and goes to n minus 1. What is n here? N is the size of the array. Suppose यहाँ पे 1. Okay, now is the screen visible to you? Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Okay, live class. अभी क्लियर है आपको स्क्रीन एंड वॉइस? Not the screen. Screen not visible. I think it is visible now. Is it visible now? Okay. Okay. So what I was saying is that we have the array size as 6, और जो आपके इंडेक्सेस हैं वो 5 तक ही जाएंगे. 5 तक इसलिए गए क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा है ना कि 0 से लेके n माइनस 1 तक जाएंगे. n आपका 6 है, 6 माइनस 1 इज 5, तो आपके इंडेक्सेस जो है वो 0 से 5 तक जाएंगे. ओके, लेट मी मेक दिस कमेंट. Next we have array length. So एरे लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वे है. सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स डॉट लेंथ, आपका एरे का वेरिएबल नेम डॉट लेंथ. इट विल सिंपली रिटर्न यू द लेंथ ऑफ द एरे. सो हियर वी आर गेटिंग 6. मैंने ये वाले एरे को अभी कमेंट इन कर दिया है. सो इसी की लेंथ हमें विजिबल हो रही है. मार्क्स डॉट नॉट क्लियर स्क्रीन. ईशान भारद्वाज, इज इट क्लियर नाउ? ईशान, it's there. Okay, maybe it's your internet problem because screen is visible to all others. Okay, so as you can see that I am printing the length of the array through
variable name of the array dot length. So we are getting here 6. Okay. Next, I am declaring a float type. I am declaring a float array by declaring. Let me first make this comment out. Now I am declaring the float type of array. नाउ द नेम ऑफ द एरे इज मार्क. जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, वो जो है आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी तो आ सकते हैं. सपोज स्टूडेंट ए के जो मार्क्स हैं 78.0. और हाँ, एक चीज जो मैंने पहले बताई थी कि फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे 78.0. सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं 98.7. थर्ड के हैं 90.89. नेक्स्ट 56.77. आफ्टर दैट 68.5. सो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 एंड 5. As you can see on the screen, we are getting 5. And what if I want to print all the elements? Method is same. You just need to write the name of the array and its position which you want to print. मैं अभी आपको सिर्फ 2 के लिए करके दिखा रहा हूँ बिकॉज सेम ही है, वो हम बार बार क्यों रिपीट करें. फिर 0th और फर्स्ट पोजीशन के लिए 78.0 एंड 98.7 प्रिंट होना चाहिए हमारा. So as you can see that 78.0 and 98.7, we are getting both these values. 5 is printed as the length of the array. After that, we are getting 78.0 and 98.7. So let me make this comment. Similar, we have string type of array whose variable name is name, and I'm declaring ABC, XY, Z, and PQR. ABC is present at the 0th position, XYZ is present at the first position, PQR is present at the second position. So if I want to print its length, similar way, name dot length, we are getting 3. And similarly, we can print the values of each element located at that particular index. So the output will be ABC, XYZ, and PQR. Okay, guys, till now everything is clear to you. Okay. So let me make this first as comment. Next, we have, if you want to display all the elements of the array, एक तो तरीका यही है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पर्टिकुलर इंडेक्स की लोकेशन दे दे के आप पर्टिकुलर इंडेक्स की लोकेशन. ओके, सो पर्टिकुलर इंडेक्स की लोकेशन जो है वो आप दे के क्या करो,
एलिमेंट्स को प्रिंट करो, जो अभी तक हम कर रहे थे। एक तो तरीका ये है कि जब आप सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हो, इससे छोटा तरीका भी हो सकता है। ये जो है तरीका आपका लाइबल नहीं होगा। सपोज जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो स्टोर करने हैं, तो अगर आपको 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट कराने हैं, तो क्या आप 500 लाइन्स का कोड लिखोगे? नहीं लिखोगे। It will basically waste your time and will occupy a too much lines of code in your program. So उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप दोनों यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो वही है जो अभी तक हम कर रहे थे। एक बार इसकी आउटपुट देख लेते हैं। वही है, डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स और एरे यूजिंग नेव वे। नेव वे क्या है? नेव वे यू कैन से लोकल वे, ऐसी मतलब सिंपल वे। सो वो क्या है आपका 56, 43, 78, 90, 34, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं प्रिंट हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम सारे प्रिंट करते आ रहे थे। ओके, इज इट क्लियर टू यू गाइज? Yes, sir. ओके, next we will use for loop. Yeah, I have declared an integer type of array having numbers 56, 43, 78, 90, and 34. What I'm going to do is I'm going to displaying elements of array using for loop. So for loop, as I have told you yesterday, that in for loop we have three arguments: initialization, condition, and increment or decrement. So I is denoting the index. इंडेक्स इज फ्रॉम जीरो। जीरो से लेके इंडेक्स आपका कहाँ तक रहेगा, कहाँ से छोटा रहेगा? नंबर्स डॉट लेंथ, मीन्स उसकी लेंथ से छोटा रहेगा। सपोज यहाँ पे आपकी सिंपली यहाँ पे मैंने 5 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज सपोज आपको कंफ्यूजन है एरे की लेंथ में, या तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? नंबर्स डॉट लेंथ का ही यूज करोगे। नंबर्स डॉट लेंथ जो है उससे छोटा होना चाहिए आपका आई। n-1 किया था ना हमने, लेंथ से 1 जो है वो छोटा होगा। देन है आई प्लस प्लस, वो इंक्रीमेंट करेगा, यानी पहले जो आपकी लूप है वो 56 के पास जाएगी। 56 के पास गई वो, उसने देखा आई इक्वल्स टू जीरो, येस, एट जीरो पोजिशन इट इज 56। zero position is less than numbers length, so what will it do? It will print statement numbers at the ith location. I is now 0, so it will print 56 first. After that I increment, जो आपका जीरोथ इंडेक्स था वो फर्स्ट इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में जाने के बाद 1 मिनट, फर्स्ट इंडेक्स में जाने के बाद वो फिर से देखेगा फर्स्ट इंडेक्स जो है वो नंबर्स डॉट लेंथ से स्मॉलर है, यस। तो वो क्या करेगा? फिर से वैल्यू प्रिंट कर देगा प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स। सिमिलरली इट विल मूव टू द सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स तक गया, उसने देखा कि क्या फोर्थ इंडेक्स नंबर डॉट लेंथ से लेस देन है, हाँ है। तो उसने क्या किया? वैल्यू जो फोर्थ इंडेक्स पे थी उसे प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट वो इंक्रीमेंट हो गया, वो गया बेसिकली फिफ्थ, आई की वैल्यू जो आपकी 5 हो गई। फिर उसने चेक किया कि क्या जो 5 है वो नंबर्स डॉट लेंथ से स्मॉलर है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, सो द कोड विल कम आउट ऑफ द लूप, और आपका कोड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी द आउटपुट, displaying elements of array using for loop, so all the numbers are being displayed using for loop. So जिस चीज को करने के लिए पहले आपको 5 to 6 लाइंस यूज करनी पड़ रही थी, वो आपका अब सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन से कोड के अंदर हो जाएगा। सपोज
अगली एग्जांपल है कि आपने इसी एरे को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। इसी एरे एरे को आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो उसके लिए जस्ट फॉर लूप की कंडीशन में छोटा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो आई जो है वो कहाँ से इनिशियलाइज होगा, नंबर्स डॉट लेंथ से, -1, नंबर्स डॉट लेंथ -1, यानी लास्ट लोकेशन जो है, लास्ट लास्ट इंडेक्स जो है आपका 0 1 2 3 4, तो आपका फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि लेंथ तो 5 है ना, 5 - 1 दैट इज 4। तो आपका फिफ्थ पोजीशन स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक कि जो है आपका आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, जब तक कि इंडेक्स जो है आइदर 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल ना हो जाए। और बाद में क्या करना है आपने, आई माइनस माइनस इंडेक्स डिक्रीज करते जाना है। स्टेटमेंट क्या है, numbers at the ith position, suppose आपने at the you need to print element at the last position at the fourth position, so it will check is 4 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, तो आपका वो फोर्थ पोजीशन पे नंबर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड एट 0। जब आपका इंडेक्स 0 हो जाएगा तो क्या वो चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी वैलिड वैलिड है क्योंकि इक्वल टू 0 तो है ही है। बट जब आपका आई जो है वो -1 हो जाएगा तो फिर वो जो है कोड आपका लूप के बाहर आ जाएगा और कोड वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। Let me check you the output. So earlier 34 was printed at the last position. Now 34 is 34 got printed at the first position. So it was a method to print reverse order of array. Okay, is it clear, guys? It is clear to you? Yes, sir. Okay. Now last we have for each loop. I think today we will not able to discuss multi-dimensional array. सो मल्टी डायमेंशनल एरे में भी बहुत कुछ था, वो 20 मिनट्स का टॉपिक है अराउंड। सो अभी हम बूट कैंप में फॉर ईच लूप तक ही रखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो बाद में दोबारा सेकंड सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे बूट कैंप का, इफ़ पॉसिबल। ओके, अदरवाइज आपका जो बूट कैंप यहीं तक रहेगा। फॉर ईच लूप में देखिए क्या करना है, फॉर ईच लूप जो है वो सिमिलर टू फॉर लूप है, बट इसमें जो है आपका सिंटेक्स थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। बार बार इसमें आपको आई, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करोगे आप, लेट मी चेक, लेट मी कमेंट इट आउट। ओके, सो इन द फॉर ईच लूप हाउ वी आर यूजिंग, या फॉर ईच लूप जो है वो अभी मतलब और 3 4 डेटा टाइप में यूज होता है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि फॉर ईच लूप जो है वो आपकी एरेस के अंदर यूज होगी। सिंपली वी आर डिक्लेयरिंग फॉर इंट एलिमेंट नंबर्स। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग जो नंबर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें उन्हें आइटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार डिक्लेयर भी कर देते हैं नंबर को दोबारा से। सो we are declaring here uh, we are declaring here numbers 56 43 78 90 and 34. So I am writing here for int elements numbers array के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें आइटरेट कर रहे हैं वन बाय वन, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एलिमेंट, और ईच एलिमेंट को हम प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल वे, नो नीड टू राइट आई ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, प्लस प्लस, माइनस माइनस, देयर इज नो नीड। it is the beauty of for each loop that printing each of elements of array has become very easy.
Concept was same as the for loop, but there is a little difference in the syntax of the for each loop. Okay, guys, is it clear to you? Yes, sir. Okay. Live class, is everything clear to you? So don't forget to share the video, like the like and share the video and subscribe the channel. ओके, तो अभी आज आपको एक और टास्क मिलेगा, उस टास्क को आपने कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू अ गूगल फॉर्म एंड यू नीड टू अपलोड द पीडीएफ ऑफ previous task as well as today's task in that Google form. Okay. After that, your responses will be evaluated for the certificates. So, if there is any doubt, you can ask me. Otherwise, you can leave the meeting. Okay, guys, is there any doubt? Live class, is there any doubt to you, sir? Only marks will send. No, no, you not need to send the marks. I'm talking about the task. जो आपको टास्क प्रोवाइड हुआ था एक, आई नेवर सॉ अपलोड ऑप्शन इन एनी ऑफ द गूगल फॉर्म. अभी तक आपको किसी भी गूगल फॉर्म में कोई अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है. एक अलग से गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड होगा, वहां पे आपने पीडीएफ अपलोड करना है टास्क का. क्विज़िज़ के तो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं, सभी के आ चुके हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द टास्क. ओके, आई हैव assigned one task you earlier, and today I'm going to assign another task. Quiz is a separate thing. We are maintaining the record of the quiz. Okay, and just keep in mind that you will get certificate only if you will. Yeah, for the task we will also give a timeline. You need to upload the task within that timeline. Don't worry, we will provide at least 2 or 3 days, so you can complete the task very comfortably for sure. Okay, so you can leave the meeting or you can leave the live class.